Dear students of class 10, me, Pamamali, as a social science teacher, today I am going to inform you some important information. As an expert of the history, which I have observed in previous year, that students of 10th, they are not attempting history and political science questions, and they attempted his geography and economics. But why they are not attempting history and political science? I think they are facing any problem. So I have decided that I will explain chapters of history for you people. Only four main chapters are there in history that I have to explain. The first chapter, that is the rise of nationalism in Europe. The rise of nationalism in Europe. Today I am going to start, and in this way I will give you some important information that easily you can get, you can understand the important points of this chapter. Students, in a first page you have seen one painting, and that painting was made by Frederick Sorio. Frederick Sorio made one painting for the nationalism. For the nationalism means he indicated two things. One was their nation state and one was their kingdom. I want to tell you one thing. What is nationalism? Actually, when we people are devoted for our country and our feeling and emotions encouraged for our country, that feeling is known as the nationalism. But nationalism, how it can encourage? Only by the step in this way we can feel we are the part of our country. We are Indian, that's why we have the feeling our country India, and that country is our country, and we feel we can do anything. We can sacrifice our life also for our country. That is the feeling of nationalism. But this feeling of nationalism, it was not there in Europe. That's why Frederick Sorio wanted to change the scenario, and also the revolutionary and the persons who wanted to change the system, they also wanted to encourage the feeling of nationalism. But how can it possible? Actually, Europe that time, it was uh, converted into a kingdom. What was the kingdom and what is nation state? I want to discuss here. Actually, some of the powerful European countries, they attack on another country and they occupied some of the areas of that country and merge in their kingdom. So in this way, suppose that some of the kingdom is there, their patchwork, Spanish, French, German, English. This way, different type of countries, patchworks, and its united shape in a kingdom. Can you think that this type of kingdoms, people, they encourage their feeling of the nationalism? It's not possible. Spanish, they will feel the nationalism feeling for the Spain only. Germans feel this type of feelings only for the Germany, and the French, they feel for the France, and in this way the Swiss, they will feel for the Switzerland. So in this way we can tell that the country which is related to their caste, communities, language, that country, it's for the main, for the feeling of the nationalism. So this chapter, uh, the persons, they wanted to show that the feeling of the nationalism, how it can be developed, the feeling of nationalism. Only in that conditions only, when the Spanish live in a Spain, Italians live in a Italy, Germans live in a Germany, so their feeling of the nationalism will be encouraged.
The same way Frederick Sorio, one painter was there, he shown the same thing. You have seen in this painting in different countries, in their country's flag they taken and they move from there. Some heavenly body also. You have seen that Jesus Christ and statue, Liberty statue of America, they also shown in that painting. So Frederick Sorio wanted to show that the heavenly body also eager to show that the feeling of the nationalism they also supporting. So it was the difference between a nation states and the kingdom. Nation states they wanted to shape and kingdom it was there. I want to show you some of the words. Please you just see that. Here is a collective identity. What is the collective identity? If we peoples have a crowd and that crowd they belong to a same community, language, country, climate and all these things are the same. So that is known as the common identity. And that common identity make that we people are belongings to a one country. And this type of feelings is show that this feeling is a feeling of the nationalism. Students, I want to tell out that this thing that collective identity is a matter that shape the common identity and the feeling of the nationalisms it will be encouraged. One word is there, absolutist. What is the meaning of absolutist? You know that our country, I want to give you the example of India only. There is a executive, legislative and also judiciary. You know very well that these three institutions are divided. That's why power also divided. But that time the power was not divided. It was connected in a one hands only. And either they were the monarchs or they were the dictator. Dictator also are the absolutist, means the legislative, executive and judiciary. These three powers are in one hand, तो those peoples are the absolutist. या तो वो मोनार्क्स होंगे या फिर डिक्टेटर होंगे जिनके हाथ में तीनों ही पावर होते हैं. लेकिन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक में ये तीनों ही पावर तीन इंस्टीट्यूशन में अलग अलग जगह पर बटे होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पावर शेयरिंग, शेयर ऑफ द पावर. तो उस समय डिक्टेटर्स थे, मोनार्क्स थे, इसलिए वो एब्सोल्यूटिस्ट थे. अंडरस्टैंड. द थर्ड वर्ड इज देयर यूटोपियन. यूटोपियन का मतलब होता है आइडियल सोसाइटी. Frederick Sorio also wanted to make an ideal society. Ideal society means this type of country where the same communities, peoples are living and same feelings are there, and they are thinking that all the peoples are belonging to one country. That country is our. That's why the feeling of nationalism will be encouraged. So it is the utopians means ideal society. Nation state, just now I have discussed that nation state and kingdom both are the antonym and synonym. Nation state, what is there? Where the same type of peoples they collected in one place and they shape a one country. That country is a what? Nation state. And what the kingdom is there? Kingdom means different type of people are living in a one country, and that country is look like a patchwork. वहाँ पर स्पेनिश भी है, वहाँ पर जर्मन भी है, वहाँ पर फ्रेंच भी है, वहाँ पर इंग्लिश भी है. तो इतने लोगों की फीलिंग्स कैसे फीलिंग्स ऑफ द नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो सकती है? It's not possible. That's why the nation state
and the kingdom, they are two different things. Kingdoms was the condition of the Europe, and the people who wanted to change, they wanted to convert it kingdom into a nation state. This thing I want to tell you. तो फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग यही बताती है हमें। फ्रेडरिक सोरियो का नाम आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि फ्रेडरिक नेम बाद में भी आएगा, ठीक है? दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। नाउ वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, नेक्स्ट इज अ important point, that is French Revolution. Although French revolutions you have learned in a class 9th and in 10th also, some of the parts of the French Revolution is here. इसमें आपका Napoleon Bonaparte is a main, and Jacobin clubs also is there, conservatives also are there. Conservatives and middle class, they are also antonym and synonym. You know that in a French Revolution, the society was divided in a 3 states, first state, second state and third states. They were the clergy, nobles and the common people. First 2 states, they dominated the common people, and common people revolted. They wanted to change. कैसा change? They wanted to change the monarchs to Republican or Democrats. ऐसा ही हुआ था. State General converted into a National Assembly. You remember that. So it was the condition of the French Revolution, and French Revolution also is what it was the milestone in changing. But in 10th class, we are not discussing about the Democrats, monarchs or the dictator. We are going to discuss about the feeling of the nationalism, कि किस तरह से राष्ट्रीयता की भावना को इनकरेज करने की कोशिश रिवोल्यूशनरी और उन लोगों ने की जो चेंज चाहते थे, ठीक है? तो हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट एक डिक्टेटर था. ही वॉज अ डिक्टेटर although, but he was a social reformer also. He did a lot of work. You know that time weight and measurement was not the same. Uniformity of the law he introduced 1804. It was the time of the Napoleon Bonaparte. 1804. It was the time of Napoleon Bonaparte, and he introduced this Napoleonic code. इसको सिविल कोड भी कहते हैं. इसमें 4-5 पॉइंट्स है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा. ये क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स में भी आता है और 3 मार्क्स में भी आता है, जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं. जैसे उसने बर्थ के आधार पर जो डिवीज़न होते थे उसको प्रोहिबिटेड किया. ही इंट्रोड्यूस वेट एंड मेजरमेंट. देन ही रिमूव्ड द जागीरदारी system also he removed. And also he although he was a dictator, that's why he dominate the people. He did not want that anybody can criticize him. उसके कोई criticize करे इस बात को वो बिल्कुल ही नहीं चाहता था. तो peasants were the freedom. सर्फडम जिसको कहते हैं जागीरदारी सिस्टम जो हमने आपको कहा, उसने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया. फ्यूडल सिस्टम जो 3 डिवीज़न ऑफ द सोसाइटी ऑफ द फ्रांस था उसको किया. उसने यूनिवर्सल लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और इस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वेट एंड मेजरमेंट. सो मेनी क्रिएटिव वर्क ही डिड. लेकिन था तो वो डिक्टेटर ही, इसलिए लोगों को वो डोमिनेट करता था कि उसके अगेंस्ट में कोई आवाज़ न उठाए. इसलिए उसने सेंसरशिप को भी इंट्रोड्यूस किया और दूसरे लोगों को कहा कि वो जो है क्या ना करें, कोई भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन ना करें जब तक नेपोलियन है. नेपोलियन वॉज अ वेरी डैशिंग, ब्रेव, करेजियस यंग मैन, and some of the countries were there. You know that. I want to tell you the difference between a conservatives and the middle class also. देखो बेटो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा कि चर्च को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, नॉबल्टी को, कोर्टियर्स, राजा को,
लुईस 16 वगैरह थे, राजा को भी बहुत महत्व दिया गया, कॉमन पीपल को महत्व नहीं दिया गया। तो ये जो सिस्टम था, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि जो पुराने विचारों के लोग थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, वो आज भी चाहते थे कि चर्च ऑफिशियल्स की महत्व बना रहे, चर्च ऑफिशियल का महत्व बना रहे, और उसी तरह से किंग्स एंड क्वीन का भी इम्पोर्टेंस बना रहे। कॉमन पीपल वैसे ही काम करें जैसे राजा और क्लर्जी उनको इंस्ट्रक्ट करें। तो पुरानी संस्था, ट्रेडिशनल संस्था पर जो विश्वास करते थे उनको कंजर्वेटिव्स कहा जाता था। उनका कहना था कि इस दुनिया में सब इक्वल नहीं है, जैसे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन कहते थे कि ऑल आर इक्वल, all are equal, but they are thinking that all are not equal, some are superior and some are inferior। तो इस तरह की कंजर्वेटिव विचारों वाली कुछ कंट्रीज थी, उनमें एक था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया is a country where the Duke Metternich was a very strong person, he was there, and also some of the more countries name I want to take, and they were the Britain, Russia, and Austria, Prussia. So these countries were there, they were thinking that कि नेपोलियन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इसको डोमिनेट करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे करके ये पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले। 39 states he formed. Napoleon formed 39 states, and these 39 states, it was the miracle। And you know that these countries, जो नेम हमने लिया अभी, ग्रेट ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, they wanted to stop the victory of Napoleon, and that's why they defeated Napoleon। इतनी कंट्री एक साथ मिलकर जब लड़ेगी तो नेपोलियन क्या कर सकता था? In a Waterloo battlefield, they combinedly defeated Napoleon and sent him in St. Helena, एक बहुत ही अज्ञात टापू था सेंट हेलेना, जहाँ पर उसको भेज दिया, और वहाँ पर ही 39 ईयर्स की एज में नेपोलियन की डेथ हो गई। तो उसकी बात हमें नहीं करनी, हमें ये करना है कि ये कंजर्वेटिव्स कंट्रीज, दीज वर द कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन? जो पुरानी विचारों पर, पुरानी संस्थाओं पर विश्वास करते थे, जो चर्च की महत्ता पर, नोबल्टी और राजाओं की महत्ता पर विश्वास करते थे, मोनार्क्स पर विश्वास करते थे, ऐसे लोगों को कंजर्वेटिव्स कहा गया। तो दीज कंजर्वेटिव्स डिफीटेड नेपोलियन एंड दे अरेंज वन ट्रीटी, एंड दैट ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ वियना in 1815। In 1815, Treaty of Vienna, it was Duke Metternich, he was the host, and they arranged this। You know that in treaty what happened? एक तरफ जीते पक्ष बैठते हैं, एक तरफ हारा पक्ष बैठता है, और जीता हुआ पक्ष अपने डिमांड बताता है और हारे पक्ष को उसकी बात को मानना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो हारा हुआ पक्ष था ही नहीं, नेपोलियन को तो उन लोगों ने सेंट हेलेना में भेज दिया था। तो जितने जीते पक्ष थे, जितने कंट्रीज कंजर्वेटिव्स, दे टुगेदर वेर सिटिंग and they decided that what they have to do, what will be happen with the France को कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे नेपोलियन जैसे लोग फिर न उभरें, फिर जो है वो ऐसा रेवोल्यूशन ना हो जाए। इसलिए उन लोगों ने एक राजवंश, वन डायनेस्टी, एंड दैट वाज नोन एज द बर्बन डायनेस्टी के हाथ में सत्ता दे दी। लेकिन बर्बन डायनेस्टी एक पपेट गवर्नमेंट थी जो यही कंट्रीज़ के इशारों पर नाचती थी, उस पर लोगों का कोई भी विश्वास नहीं था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बर्बन डायनेस्टी को इस्टाब्लिश किया गया। 39 स्टेट्स जो नेपोलियन ने जीते थे उसको उन्होंने अनटच्ड रखा, उसको उन्होंने नहीं छुआ। उसका कोई पर्पज़ रहा होगा कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल है वही इसको क्या करेगी, ऑक्युपाइड करेगी। दैट्स वाई दे लेफ्ट 39 states as they were there।
this way, the different type of prawns, other mines, रिसोर्सेज दे ऑक्युपाइड। जैसे बंदरबाट होता है तो जीते हुए पक्ष ने फ्रांस को एक तो कंपनसेशन देने को कहा, उसके वहाँ पर बर्बन डायनेस्टी को बैठा दिया और उसके बाद फिर उसकी सारे रिसोर्सेज पर कब्जा करने की चेष्टा की। और ये एक तरफा मामला था जहाँ पर कंजर्वेटिव्स ये जो थे एक साथ मिलकर डोमिनेट कर रहे थे फ्रांस को। इट वॉज द कंडीशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से नेशनलिज्म को इनकरेज करने के लिए रेवोल्यूशनरीज, इसको कहते हैं क्रांतिकारी, दे ऑल्सो टुक पार्ट। And here we will discuss about the Joseph Mazzini. Joseph Mazzini, he formed a secret society and he did a lot of work to encourage the feeling of nationalism. You know that Joseph Mazzini से जितने भी कंजर्वेटिव थे वो बहुत भयभीत रहा करते थे क्योंकि वो अंडरग्राउंड रहता था और जैसे ही वो बेस पर आता था और वैसे ही उसका जो है वो कर्तव्य शुरू हो जाते थे। और कंजर्वेटिव्स दे वर थिंकिंग दैट द revolutionaries are the big enemy of the what country. That's why they wanted to dominate them. And Joseph Mazzini एक बहुत important character, ये भी आपको याद करना होगा। And the other countries because they were fronted by the Joseph Mazzini. Secret society ये भी पूछा जा सकता है। तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड जैसी कंट्रीज़ में भी डिफरेंट टाइप के ये जो है वो आपका सीक्रेट सोसाइटी बना और यहाँ पर तो जर्मनी में बनाया गया। फिर हम लोग एक डिस्कस करेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशन। ये 1830 से 1848 तक हुआ जिसमें आपको वी विल डिस्कस अबाउट द रोमांटिसिज्म एंड द हार्डशिप। आई वांट टू डिस्कस अबाउट द रोमांटिसिज्म। किस तरह से कल्चर और फोकलोर and songs, this type of things can be encouraged the not feeling of the nationalism. रोमांस से आपको समझ में आता है कि केवल men and women, केवल मेल और फीमेल का लव, no, it's not there. Romance can be happen with our country, with our parents, with anyone's. So romanticism, it was a system where they introduce the different type of culture, traditions, folklore, folk tales, and this type of things. They wanted that कि this type of feelings also by the encourage this type of songs. देखो एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर हम कभी यूरोप गए और वहाँ पर हमने अचानक ये जो है वो आपका नेशनल एंथम की पंक्तियाँ सुन ली गई, हमारे पैर रुक जाएंगे और हम सीधे खड़े होकर अपने नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट पे करेंगे। इट इज़ द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म बाय द नेशनल सॉन्ग। सो सॉन्ग वंदे मातरम कोई ऐसा सॉन्ग नहीं था, लेकिन उस वंदे मातरम के लिए और वो जय भारत माँ के लिए कितने लोगों ने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। क्यों? इट वॉज द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म। बाय showing this feeling that we are singing the Vande Mataram or we are singing that any national song that is related to our country. So song, poetry, folklore, folk tales also encourage the feeling of nationalism. That is the motto of the romanticism. And one was their hardship. Hardship का मतलब economic crisis. When they face the economic crisis and in that condition the prices were very high, you know that, and the peoples were unable to purchase the food for themselves, unemployments were there, and populations is increasing, and for that different type of populations food were not there. Hardship, it was the economic crisis that also Europe faced. So these two topics are also important. One is a romanticism. Romanticism
and second is hardship. Romanticism related to 1830 and hardship it was happened that time the Europe faced the economic crisis. So student, in our next video, I will tell you about the very important thing, and they were the Germany, Italy unification, and also the unification of Great Britain, and also I will discuss about the Balkans, and I will discuss about uh, the uh, the visualization of the nation. Visualization of the nation. These things I will discuss after that. This video, if you like, the next video also certainly you will see. And third video, I will tell you some of the important questions and that we will discuss. Thank you.